Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. Today we are going to talk about Earth Rhythm Phyto Gel. Recently I did some shopping from Earth Rhythm. मैंने उनके I think 7-8 different products order किए थे, mostly skincare, but 2 of the products were from their hair care range as well, which I'm obviously going to talk about all of those products in detail in some of my upcoming videos. But this particular video I had to dedicate to this single product, not because it is anything too bad or too good, but just because I thought अगर मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में दूसरे वीडियो में बात करती तो उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती and I did want to cover everything about this product. That is because out of everything that I ordered from that brand, mostly the products worked for me, but this particular one did not. It kind of broke me out. Now, we are going to go all logical about this review, okay? I'm not just straight away going to blame the product for it. Maybe it was a phase of skin purging or whatever, but I still do have my own reasons as to why I feel that this might not have, suited me. And for the same reason, I think कि ये शायद आप में से भी कुछ के लिए वर्क नहीं करे for those reasons. So if you are interested to know about my experience of using it, then please continue watching. So to begin with, let's just get the basics out of the way. First, let's discuss about the packaging. This is how the cardboard box packaging looks like, and इसके अंदर से आपको ये एक ग्लास की बॉटल मिलती है. This is a very stylish and luxurious bottle. बहुत ही robust और strong है ये. इसमें पहले आपको ये lid मिलता है और उसके बाद आपको ये pump style bottle मिलती है, and you have to just pump out the product like this. So if you look at the texture, this is kind of like an aloe vera gel. It hardly takes about 10 seconds for it to get absorbed in the skin, and then it feels really lightweight on the skin. Now let's talk about some of the basic features of this product, and let's go through some of the claims that the brand is making. This one comes with Centella asiatica and horsetail extract. Apart from that, इसमें आपको rosemary extract भी मिलता है, and साथ में आपको मिलता है hops extract. These are some of the really good ingredients. All of these ingredients are loaded with antioxidants, and they have antibacterial and antimicrobial प्रॉपर्टीज ऑल्सो. तो अगर आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेशन है तो उसको रिड्यूस करने में काफी हेल्प करता है. और स्किन पे जिन लोगों को इचिंग होती है, पफीनेस हो जाती है, स्किन डजंट फील हेल्दी एंड कूल, उसको काफी ज्यादा कूल डाउन करती है ये बाय रिड्यूसिंग द हीट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्किन. नाउ दे आर सेइंग दैट दिस इज calming, soothing, hydrating fluid. This is mainly for acne prone and sensitive skin. ये 50 ग्राम्स की पैकेजिंग है जो आपको 795 रुपीज में मिलती है, यानी ऑलमोस्ट 800 रुपीज में आपको मिलती है. Now I have used almost 30% of it. I have not used much, but I have not used really less also. I have tried this on for easily 15 days, and then also I had to just stop it because it was not working for me. If we go by the claims, the brand is saying that this is kind of an overnight treatment gel for your skin. So you are supposed to apply it overnight. आप एक हल्की सी पतली सी लेयर इसको हर रात लगा लीजिए, उसके बाद स्किन को थोड़ा मसाज कीजिए, and then you go to bed. They are saying that if you do this regularly in your PM routine, of course, then it is slowly going to, treat your damaged skin and also fade away the acne scars. Okay, so now that we know that it includes all these nice things, then why do I think that it did not suit me or it did not work for me? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सबके साथ होगा. हो सकता है कि बहुत लोगों के साथ ये अच्छे से काम भी करे. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इसके बारे में 90% लोगों से पॉजिटिव रिव्यूज ही सुने हैं ऑल ओवर द इंटरनेट और वट एवर द ब्लॉगर्स एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट. सो आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दोज गाइज आर रॉन्ग. एंड इफ यू आर समबडी जिसके लिए ऑलरेडी ये प्रोडक्ट वर्क भी कर रहा है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. इट जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी, एंड लेट मी नाउ टेल यू वट आर द रीजंस दैट आई थिंक डिड नॉट वर्क फॉर मी. सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मैंने नोटिस करी है वो एक तो ये कि इसमें लेमन पील एक्सट्रैक्ट है, जो कि वैसे बाय नेचर इज वेरी गुड. इट हेल्प्स टू enhance your overall complexion and also reduce those scars and to lighten up any kind of marks and all. It is good, but it doesn't suit everybody. By nature ये एक सिट्रस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट होता है जो थोड़ा सा एसिडिक हो सकता है अपने पीएच में, और इसलिए कई लोगों की स्किन पे ड्राइनेस कर सकता है, रैशेस कर सकता है. एंड जिनकी स्किन थोड़ी सी भी सेंसिटिव हो और जिन्हें सूट नहीं करे तो उस ड्राइनेस की वजह से उनको फर्दर ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, बिकॉज ये जो सिट्रस फ्रूट्स के पील एंड ऑल होते हैं इनका पीएच 2 to 3 के आसपास होता है. दैट्स इट. 3 भी मैं मैक्स बोल रही हूँ. 2 to 2.5 टाइप के बीच में रहता है, और जबकि हमारी स्किन का पीएच
pH 5 to 7 के बीच में रहता है. Usually in products like these आपको कुछ emollients देखने को मिलते हैं जो कि ड्राइनेस को थोड़ा सा बैलेंस आउट कर सकें, बट इसमें आई एम जस्ट नॉट सेटिस्फाइड विद द फैक्ट कि इसमें जो विटामिन ई यूज किया हुआ है दैट इज लाइक टुवर्ड्स द वेरी एंड, दैट इज जस्ट द सेकेंड लास्ट इंग्रेडिएंट एंड दैट टू इट कम्स राइट बिफोर बेंजाइल अल्कोहल एंड सॉर्बिक एसिड जो कि ऑब्वियसली एज प्रेजर्वेटिव्स यूज किए हुए हैं. सो द अमाउंट is not sufficient to balance out the dryness that is caused from the other ingredients. Now the third point is even Centella asiatica that they are talking about, that is number 11th ingredient out of the entire list that has 16 ingredients. So even there the concentration I felt was way too low. Coming to my last point of observation here, this does have Hamamelis virginiana yani कि witch hazel leaf extract as the 4th or 5th ingredient in the list. Now I personally do not have any problems with witch hazel, but the issue with this is that this does not suit everyone. अगर आप डिटेल से इसके बारे में समझना चाहते हो, what's the whole confusion about, what's the controversy about it, and उसके goods और bads और full analysis के बारे में, तो मैंने simple purifying facial wash का review किया था, and I think yeah that was it. So I'm going to provide you the link to that video. You can definitely check that out. वहाँ पे मैंने उसके बारे में बात की हुई थी, so I'm not going to talk too much about witch hazel in this particular video. But the point that I'm trying to make is that it can cause a lot of dryness in a lot of people's skin. It might not work for everyone, and if it does work, it does have the ability to reduce your inflammation and cure your acne. And even coming to acne now, जिन लोगों के acne उस तरह से होते हैं, occasional breakouts and tiny bumps and all, उस पे तो ये definitely work करता ही है. लेकिन अगर आपको cystic acne है, pimples filled with pus and all, then those kind of pimples, अगर वैसी आपकी सिचुएशन है, इट माइट एग्रीवेट द प्रॉब्लम. सो इट्स अ 50-50 थिंग. कई लोगों को अच्छा लगता है, कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, बट जस्ट द फैक्ट के ये नंबर 4th या 5th पे आता है यहाँ पे, सो आई एम जस्ट डाउटफुल कि कभी उसकी वजह से भी मुझे इतनी ज़्यादा ड्राइनेस नहीं हुई हो, एंड मे बी दैट्स द रीजन इट ब्रोक मी आउट अ लिटिल. सो ओवरऑल इफ आई वर टू सम अप द होल वीडियो, आई वुड से दैट इफ यू कम फ्रॉम द नॉर्मल स्किन फैमिली or maybe oily skin family, then you can definitely use it as a gel, but do not expect it to moisturize your skin. This is just good as a hydrating gel, a soothing hydrating gel with a cooling effect, but do not expect much from it. Don't think that it is going to help you fade away your acne scars or anything. On the other hand, if you come from the dry skin family, it might still work for you, but again, as I said, it is not a moisturizer, it is just like a gel, so you will have to top it off with a moisturizer. And for sensitive skin type people or people having pimple situation or cystic acne and all, I think it's a good idea to kind of stay away from it. That's it that I had to share for this particular product, you guys, but you please stick around for my next videos to come, जहाँ पे कि मैं इसी brand के बाकी products के बारे में भी बात करने वाली हूँ डिटेल में, especially those of you who requested to know about their phytoceramide and phyto oil free moisturizer range. The next video is going to be for you, so please do stay tuned for that. With that, it's a wrap, guys. I'm gonna meet you guys very soon in my next video. Till then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.